जय गुरु जी संगत जी। अ, कल को कल का थोड़ा दोहरा लेते हैं। हमने जाना था कि किस तरह से जब स्वामी रामा जी 16 साल के थे ना, तब वो किस तरह से एक ओल्ड एडेप्ट जिनको बूढ़े बाबा जी बोला जाता था और नागा हिल्स में रहते थे, तो वो स्वामी जी को मिले। और किस तरह से उन्होंने कहा कि आई एम नाउ ओवर 90 years old now, and I feel that my body is not fit. It's just like an instrument for me, and it's not fit for me to remain in samadhi for a long time. तो फिर अब मैं इसको बदलना चाहूंगा। और फिर इस तरह से जिस क्रिया को हमने पढ़ा था कि पर काया प्रवेश। और फिर इस तरह से जब उनको पता था कि एक इंसान है जिसको जो अपनी बॉडी छोड़ने जा रहा है। और फिर इस तरह से उन्होंने जब अपनी बॉडी बदल भी ली, तो उनका बूढ़े बाबा से उनका नाम आनंद बाबा जी पड़ गया। और जब स्वामी रामा जी उन्हें मिले, तो स्वामी रामा जी तो पहले इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू ट्यून हिज माइंड एंड टू जस्ट to his new body, but his characteristics were same, exactly same. तो उन्होंने बोला भी स्वामी रामा जी को कि आई एम सॉरी यू कुड नॉट बी विद मी व्हेन आई चेंज माय बॉडी। तो जब स्वामी रामा जी ने ये सुना, तो उनको बहुत ही ये स्ट्रेंज लगा कि किस तरह से ऐसे भी होता है। और किस तरह से उन्होंने बोला जस्ट लाइक अ नॉर्मल थिंग कि हाँ भाई, यू कुडंट बी विद मी व्हेन आई चेंज माय बॉडी। और एक एक तरफ तो वो कितने फेमिलियर थे स्वामी रामा जी के साथ, और अब एकदम से उनकी न्यू बॉडी आ गई, क्योंकि उनके लिए तो वो सिर्फ एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट ही था। उसके बाद फिर जब हमने ये जाना कि जो स्वामी रामा जी के मास्टर बंगाली बाबा जी, जब उन्होंने सोचा कि नहीं, नाउ इट्स टाइम दैट आई शुड आल्सो लीव माय बॉडी, तो स्वामी जी कहते हैं द विटनेसिंग ऑफ डेथ ऑफ अ योगी ना, इसको तो बहुत ही अच्छा समझा जाता है हमारे ट्रेडिशन में। और कहते हैं ये मास्टर की अपनी विल पे होता है, वो अपनी मतलब जिस तरह अगर वो ज्यादा जीना चाहते हैं, अपनी आयु लंबी रख के और जीना चाहते हैं, बट इफ दे वांट टू लीव देयर बॉडी देन आल्सो इट्स अप टू देयर विल, इट्स एंटायरली देयर डिसीजन। और कहते हैं उनके लिए तो ऐसा है टू कास्ट ऑफ द बॉडी जस्ट लाइक द स्नेक लीव्स हिज स्किन। तो स्वामी रामा जी के मन में तो पहले आया ना कि हाउ आई एम गोइंग टू लिव विदाउट हिम, बिकॉज वो अटैचमेंट तो होती है, बट एट द सेम टाइम उनको ये भी लगा कि नहीं, व्हाई शुड आई स्टॉप हिम, व्हाई शुड I should just hold him back just for my thing. It is also not, it's not a good thing to do. और कहते स्वामी जी कहते I was in deep sorrow, but at the same time ये भी तो हुआ ना कि sooner or later he has to go, because your body kya hai, it will sooner it will just go to dust sooner or later, कहते ये तो inevitable है। फिर किस तरह से स्वामी जी ने पर ये जरूर मांगा अपने मास्टर जी से कि प्लीज जब भी मुझे आपकी जरूरत हो, जब मैं उदास हूँ, डिस्ट्रेस में हूँ, और आई एम हेल्पलेस, एंड देन when I cannot deal with the situation anymore, then please promise me that you will be with me, you will be by my side, and you will bless me. तो कहते हम सब ने we bowed before him, और वो accomplish से पोज में बैठ के आंखें बंद की और जेंटली से ही मटड ओम एंड बिकेम लाइफलेस। कहते उसके बाद फिर हम सब ने we couldn't control ourselves, we started crying. स्वामी जी कहते we didn't know whether we should bury the body or immerse it in the river. हमें तो ये समझ ही नहीं आया कि कैसे करें। कहते we couldn't decide. तो हम अपना मन नहीं बना पाए इस पे, like it's dilemma में थे हम। कहते for 2 hours we discussed this and consoled each other, but could not come to any conclusion. तो स्वामी जी कोई भी concrete conclusion पे नहीं पहुंच पाए। कहते finally the decision was left to me. We thought of carrying his body to our cave, but since it was 63 miles away, it would take several days to reach there. तो स्वामी जी कहते फिर सारा डिसीजन मेरे पे आ गया, it was my thing, my decision, my call. तो मैंने सोचा चलो मैं उनके शरीर को, डिवाइन शरीर को उठा के केव में ले आऊंगा। We thought of carrying his body to our cave, but क्योंकि ये 63 miles away था, तो इसको तो बहुत सारे दिन लग जाने थे। कहते nonetheless another Swami and I started to carry his body toward the cave. In the mountains it was not possible to travel at night, so we stopped in a small cave.
कहते we were very quiet and passed the night sitting and looking at each other. I never believed that my master would ever leave me, but he had done so. कहते ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे मास्टर को भी एक दिन जाना पड़ेगा, पर उन्होंने ये किया. कहते next morning after sunrise, we started carrying his body again and walked about 15 miles. कहते we thought of disposing of the body, but we could not decide where and how it should be done. कहते वही बस हम इसी विचार विमर्श में लग गए कि भी कैसे करें, कैसे उनकी बॉडी को डिस्पोज किया जाए. कहते we were afraid that the body would decompose. कहते 2 दिन निकल गए थे, 2 nights had passed, and on the 3rd morning we decided to bury it on the top of the mountain from which we could see our cave far away in the distance. कहते 2 दिन बीत गए थे, तो 3rd morning को हमने सोचा कि हम इसको bury कर देंगे वो mountain के ऊपर बिल्कुल टॉप में, जहां से हम अपनी केव भी दे सकते थे डिस्टेंस पे. कहते we dug a pit 6 feet deep and lay the body inside. तो उन्होंने खोदना शुरू किया, 6 फीट तक उन्होंने खोदा और उनकी डिवाइन शरीर को वहां रखा. कहते we wanted to cover up the body with boulders and earth, but none of us could move our limbs. We could talk to each other, but all 5 of us became completely inert and lifeless, as if we were paralyzed. कहते हम तो हिल ही नहीं पाए, हमारे limbs तो काम ही नहीं किए. कहते it was an experience which I'd never had before. स्वामी जी कहते ऐसा तो मैंने कभी भी experience नहीं किया था. I felt as though my soul were entirely different from my body, and I was fully conscious of the separation of body and soul. तो बहुत ही different experience हुआ स्वामी जी के साथ. कहते मुझे लगा कि मेरी आत्मा अलग है शरीर से, पर हाँ मुझे कॉन्शियसनेस पूरी है कि I was fully conscious of the separation of body and soul. कहते I felt like jumping out of my body and the others had a similar experience. कहते ऐसे लगा कि मैं शरीर के बाहर निकल के जंप करूं, I should start hopping, and the others also had the same experience. कहते there was a small tree just 5 feet away from us, and we all heard the sound of my master saying, I'm here, wake up, do not be sad. तो एकदम से फिर उनको उनके मास्टर की आवाज आई कि उठो, I'm here, उदास क्यों हो तुम, get up. कहते do you need me in my body again, or do you want me to help you without the body? तो इन पे उन्होंने मास्टर ने छोड़ दिया डिसीजन. कहते तुम चाहते हो मैं शरीर में आके तुम्हारी मदद करूं कि उसके बगैर करूं. स्वामी जी कहते I need you in your body. कहते with one voice we all cried for his help and begged him to come back. तो लिटरली स्वामी जी और उनके जो साथ में थे उन्होंने सबने they implored, they pleaded, no, you come back. कहते then I felt a tingling sensation in my body. कहते slowly the numbness went away and we started moving our limbs, जिस तरह से उनके numb हुए थे ना, उनको लगा कि नहीं, as if we are paralyzed, we can't move, we are immobile. तो उस तरह से tingling sensation के बाद उनका शरीर हिलने लगा, टांगे वगैरह सब हिलने लगी. कहते my master got up and came out of the pit. वो जो गड्ढा खोदा था ना उसमें से वो बाहर आ गया. He said, it's too bad that you still need me in the body. कि भाई ये खराब बात है, अभी भी तुम मुझे शरीर ही जानते हो और तुम्हें शरीर की जरूरत है. कहते you still worship the form and cannot go beyond it. Your attachment to my body is an obstacle. ये तो एक रुकावट है तुम्हारे लिए. It's gonna hamper your growth. कहते now I will see that you are not attached to my body anymore. Then he started teaching me the relationship between the body and the formless soul. तो उनके मास्टर ने जाते जाते भी उनको ऐसी सीख देके जाना चाहते थे. कहते कि रिलेशनशिप क्या है शरीर का और एक आत्मा का जिसका कोई रूप नहीं है, वो तो फॉर्मलेस है. कहते many times when I lived with him in the cave, he would remain in absolute silence for several days without any movement. Whenever he opened his eyes, we would go and sit near him. कहते ऐसे बहुत बारी होता था ना कि कई दिन तो ऐसे बीत जाते थे, वो इतने दिन साइलेंस में रहते थे और हिलते भी नहीं थे, और जब भी वो आंखें खोलते थे तो हमें होता था कि चलो अब हमें चांस मिल गया है, उनके पास बैठे हैं, शायद हमसे कुछ बात करें. one day he told me there are 3 categories of beings:
तीन प्रकार के बीइंग्स होते हैं. नंबर वन, द एब्सोल्यूट बीइंग, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. Number two, the sages who have power over birth and death, who are semi-immortal beings. They are born and die at their will. The number one absolute being, Guruji, the Lord of the universe. और फिर ऐसे sages जिनके बारे हम पढ़ रहे हैं अब, जिनके बारे में गुरुजी ने पढ़ाया कि उनके पास इतनी शक्ति है कि बर्थ और डेथ का वो अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से अपना शरीर भी त्याग देते हैं. नंबर थ्री, द ऑर्डिनरी पीपल, जो हम जैसे लोग होते हैं, ऑर्डिनरी पीपल हु डू नॉट हैव मास्टरी ओवर बर्थ एंड डेथ. तो तीन तरह के उनके मास्टर ने बताया, इस तीन प्रकार की कैटेगरीज होती हैं. नंबर वन, एब्सोल्यूट बीइंग द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. नंबर टू, द सेजेस हु हैव द पावर ओवर बर्थ एंड डेथ एंड हु आर सेमी इमॉरल बीइंग्स. एंड थर्ड, ये जो sages होते हैं, they are born and die at the will. They take birth and they die at their own will. And number three, the ordinary people, कहते हैं, who do not have mastery over birth and death. For them, death is a constant fear that lurks in their minds and hearts. जो आम इंसान है ना, वो तो हमेशा डर में ही जीता है कि पता नहीं कब शरीर त्यागना पड़े, और उस fear के साथ ही वो जीता रहता है. कहते हैं, such ignorant people suffer. कहते a sage and a yogi are not bothered by the minor events of death and birth. वो उनके लिए ये बहुत छोटी चीज है, बहुत माइनर समझते हैं, और हम लोग तो we give it a really great importance. कहते they are free from all fears. Being free from all fears is the first message of the Himalayan sages. कहते Himalayan sages का पहला मैसेज क्या है? फ्री हो जाओ इस डर से, क्योंकि जो ये शरीर की मौत होती है ना, आत्मा की नहीं होती है. अगर हम सब अपने आप को स्पिरिट बीइंग समझने लग जाए ना, तो कितनी कितनी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही दूर हो जाएंगी. बॉडी है, बॉडी तो नाशवान है, बट इस बॉडी इंस्ट्रूमेंट मिला हुआ है भगवान का दिया हुआ, उसको हमने ख्याल जरूर रखना है. कहते that fearlessness is one of the steps towards enlightenment. ये पहला स्टेप है, fearless. Just be fearless. In the course of the conversation, my master told us that the highly accomplished yogis and sages are ageless and can live as long as they wish. तो कहते जब कन्वर्सेशन वार्तालाप कर रहे थे ना, मास्टर ने बताया हमें कितने अकम्प्लिश रहते हैं, पहुंचे योगी और सेजेस होते हैं ना, वो एजलेस होते हैं. वो अपनी हमने देवराहा बाबा जी के बारे में भी पढ़ा था, एजलेस. एक महाअवतार बाबा जी, उनको तो हमेशा से कहते हैं एजलेस. बहुत 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 ऊपर माना जाता है उनको भी. और कहते हैं वो अपनी इच्छा से जीते हैं. The individual soul can voluntarily cast off his body and can ever enter into another body. ये भी हमने जाना पर काया प्रवेश उनके लिए ये पॉसिबल है. अपनी बॉडी को छोड़ने के बाद जब उनकी इच्छा होती है किसी का शरीर लेने को, और वो उसमें आ जाते हैं, बिकॉज उनको लगता है अब ये बॉडी फिट नहीं रही, अब मुझे दूसरे शरीर चाहिए, ताकि जो भी मेरी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट या स्पिरिचुअल क्रिया है या समाधि है, मैं उसके उस शरीर से पूर्ण कर सकूं. It is said that the great yogi and sage Shankara was gifted with such power. One of the scriptures described this process as Parikaya Pravesh. I was intensely interested in experiencing this process of the changing of the body. स्वामी जी कहते हैं मेरे को बहुत इसमें इंटरेस्ट रहा है कि भी किस प्रकार से ये बदल देते हैं बॉडी. स्वामी जी कहते हैं, though earlier I had a similar experience in Tibet with my grandmaster. तो मुझे ग्रैंडमास्टर के साथ टिबेट में तो एक्सपीरियंस रहा ही है. My master told me that it's not unusual or impossible for an accomplished yogi to change his body, provided he finds a suitable replacement. अब देखो जिस बॉडी में उसने जाना है वो भी तो उन्होंने देखना है ना कि सुटेबल है भी है कि नहीं. जो भी उन्होंने आगे क्रियाएं करनी है अपने स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट के लिए, तो उसके लिए that body is fit or not. He described 3 ways of expanding the lifespan. अब देखिए उन्होंने 3 तरीके बताए हैं उनके मास्टर ने कि लाइफ स्पैन कैसे फॉर द लॉन्जिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं. नंबर 1, थ्रू हाईली अकम्प्लिश योगा पावर्स, है ना, जिसमें बहुत बहुत योगा पावर्स हैं, योगिक क्रियाज हैं, उसके कारण आप अपना उस माध्यम से आप अपनी आयु बढ़ा सकते हैं. एंड अ डिसिप्लिन लाइफ, बिल्कुल अगर आपकी लाइफ डिसिप्लिन है, आपका खान पीन, आपका लाइफ स्टाइल जैसा है, one can live for a long time. कई बार ऐसा देखा जाता है ना, लोग कहते हैं भी ठीक है जिन्नी उम्र लिखी है ओ ना मरना, चलो ऐश कर लो, जो मर्जी कर लो. इस तरह नहीं होता है. With your willpower and with your right diet, with the exercise, you can definitely increase your lifespan.
Okay, number two, by changing the body, one can continuously to live consciously with all the experiences carried from the previous body. वो तो है, ये मुझे लगता है ये जो पर काया प्रवेश के बारे में भी बात कर रहे हैं कि आप एक शरीर से दूसरे शरीर को जब धारण कर लेते हैं, पर हाँ वो तो सिर्फ एक शरीर है, जो आपके एक्सपीरियंसेस है, जो आपके संस्कार है, वो आप साथ में ही लेके आते हैं जो आपके प्रीवियस बॉडी में थे. Number three, enlightenment is freedom itself, and there is no need of clinging to the garment which is called body. Enlightenment is a freedom itself. देखो अगर जीते जी आपको सब ज्ञान हो गया ना तो वो ही मोक्ष है. मोक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि ठीक है जी असी दोबारा दी वापस नहीं आना. अगर आपने कहते हैं ना जिसने जीते जी मरना सीख लिया, वो भी एक enlightenment है. फिर आप फ्री हो जाते हो बॉन्डेजेस से, क्योंकि आपको डर नहीं लगता. आप दुनिया से ऊपर उठ के जीने लगते हो. आप सब कुछ अपनी ड्यूटीज भी करते हो, yet you stay detached, you know. You feel कि fine, I'm just playing my role, but yes, at the same time I'm going to do my duty to the fullest. I'm not going to do it half-heartedly. और यही तो एनलाइटनमेंट है. आपको जीते जी ज्ञान मिल जाए. और इसी करके गुरुजी ने पहले लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड पढ़ाई कि आप स्पिरिट वर्ल्ड का जाने. उससे गुरुजी ने कितनी एनलाइटनमेंट दी हमें. और दूसरी किताब ये लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स, कि भी हाँ किस किस तरह के मास्टर्स होते हैं, और उनके थ्रू हमें ग्लिम्स दिया कि एनलाइटनमेंट के रास्ता क्या है, और हमारे गृहस्थ आश्रम के लिए हमारा रास्ता क्या है. सो एनलाइटनमेंट इज फ्रीडम इटसेल्फ, एंड देयर इज नो नीड ऑफ क्लिंगिंग टू द गारमेंट व्हिच इज कॉल्ड बॉडी. सो ये गारमेंट ही तो है. After studying a few rare manuscripts and learning at the feet of my master, my desire for knowing the science grew stronger. So Swami ji कहते मेरे को तो मेरी जो desire है ना और flicker होती रही. I just wanted to have thorough knowledge about this science. कहते the sages explored and expounded the deep truth of life. These truths are the truths of all time and all humanity, and hence the universality of their appeal. Deep down in the hearts of all realized man, no matter what their race and what their color, is the desire to understand and to hold to the truth, to attain to the higher destiny of the human race. फिर कहते हैं man has been searching for immortality since the dawn of civilization. If one has done something in the past, the same thing can be done by someone today. And if someone can do that today, the same can be done by all. फिर कहते हैं life expresses itself through the medium of the body. Desires seek form for self-manifestation. Desire is the inner soul and form is external. Without content, there can be no form. It will be a dead matter. Being devoid of rhythmic vibration, neither form nor desire is content and will be eternally homeless. Therefore, desires seek embodiment while form seeks desires. Okay. Many are those who perceive the mere body, being unable to apprehend the life within. कई लोग तो सिर्फ शरीर को ही सब कुछ मानते हैं ना. कहते ये नहीं पता अंदर क्या है. They consider the lines of the picture to be final. They cannot pierce through them. Their realization must ever remain untrue, their knowledge incomplete. To learn more about man's inner life rhythms, one should learn to go beyond desire and to cultivate the inward sensitivity and one-pointedness of that mind, which can seek help from the finer forces of rhythmic vibrations. वो तो है ना, इच्छाओं से ऊपर उठ के एक वन पॉइंटेडनेस अपने माइंड को रख के अंदर की ओर जाना. The life is a rhythm, and one who knows this rhythm can live as long as he wishes. That's beautifully described. Now, this is the last chapter, that's number 14, Journey to the West. So, Swami Ji कहते हैं, East is East and West is West is a primitive idea. The modern man has reached the moon. The West is advanced in technology and the East in spirituality. बिल्कुल ये सही है. जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, नो डाउट टेक्नोलॉजी उनकी आगे जाते रहे, एडवांसमेंट हो रही है, पर ईस्ट है और स्पिरिचुअलिज्म में बहुत बहुत आगे है. why not build a bridge of understanding? That the West has so much to share with the East is beyond doubt, but the East also has something to contribute to the West. The flower of the West without the fragrance of the East is a flower in vain. So ये तो है ही है. तो इस तरह से हो जाए ना, West and East, they both complement each other. Okay, the new chapter is A Doctor's Recurring Vision. कहते हैं, there was a psychiatrist
from a small town in Germany. People often called him a crazy doctor because he did not believe much in modern medicine. He was more inclined to search for esoteric knowledge. In 1955, he had a recurring vision of my master. तो जिस psychiatrist की बात कर रहे हैं ना, जो जर्मनी से थे, लोग उनको थोड़ा सा wacky and crazy थोड़ा ऐसे मानते थे, क्योंकि वो मॉडर्न मेडिसिन में उनका कोई विश्वास नहीं था. कहते उनको 1955 में ना बार बार विजन्स आ रहे थे स्वामी जी के, स्वामी रामा जी के मास्टर के, बंगाली बाबा जी के. They felt that the man who was appearing in his vision was calling him to come to India. The same vision occurred again and again for 7 days. So he went to Frankfurt and bought an airplane ticket for India. But while waiting for his flight, he fell asleep in the airport lounge and missed his plane. तो जो विजन आ रहे थे कि भी भारत देश आए, बार बार 7 दिन आते रहे, तो चलो वो उन्होंने फ्रैंकफर्ट गए और टिकट भी ले लिया भारत का. बट कुछ ऐसा हो गया कि सो गए, आंख लग गई उनकी, तो उनका प्लेन मिस हो गया. हो सकता है कुछ उनके स्वामी जी की लीला भी हो इसमें. आगे पढ़ते हैं. Shortly before that, my master asked me to go to Germany to learn something about Western psychology and philosophy. A businessman from Bombay managed to get my ticket to Frankfurt and gave me a few letters of introduction to his friends there. With further instructions from my master, whom I adored as my Guru Deva, I left for Germany. The Swami ji Germany ki or chal pade. When I arrived in Frankfurt, the doctor was at the airport. Wahi doctor airport pe tha. When he saw that I was a Swami from India, he approached me and showed me several drawings he had made of the person in his recurring vision. He asked me if I knew of any such man in India. तो जब उन्होंने देखा भी हाँ जी ये स्वामी जी है, तो वो फटाफट स्वामी जी के पास गए और अपनी वो चित्र बनाने लगे कि क्या आप जानते हैं ये मेरे विजन में बार बार आते हैं. कहते the first thing he said to me was, please help me. The man in the drawing has appeared to me in a vision again and again. I have tried to draw the picture of my vision as well as I could. I'm sure it's not an hallucination. This vision has created such deep grooves in my mind that I cannot do my work. तो उन्होंने बोला ना कि ये इस विजन का मेरे ऊपर इतना इम्पैक्ट है, इतना इन्फ्लुएंस है कि मैं और कुछ कर ही नहीं सकता. I can't concentrate. All that I can think of is this image. You are a Swami from India. Perhaps you can help. तो उन्होंने कहा कि आप भारत से हैं, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए. तो स्वामी जी कहते when I saw the drawings, I said, he is my master. He insisted that I go back to India with him and take him to my master. But my master did not want me to return right away. तो वो तो इतने एक्साइटेड हो गए, कहते प्लीज आप मेरे साथ चलो, हम इकट्ठे चलते हैं इंडिया और मुझे अपने मास्टर के पास लेके जाओ. स्वामी कहते नो, कि मेरे मास्टर ने तो मुझे बिल्कुल ही मना किया हुआ है और वो नहीं चाहते थे मैं उसी वक्त वापस आऊं. He thought that I was attached to his moral being and wanted to break the moral ties to strengthen my awareness of the immoral link between us. क्योंकि मास्टर ने सोचा ना कि शायद इनको आदत पड़ गई मेरे मॉर्टल बीइंग की, और इसी कारण वो उन चीजों को तोड़ना चाहते थे कि नहीं, जो इमॉर्टल लिंक है ना वो हमेशा से रहने वाला है और वो ही रहे. कहते he wanted me to remain physically away from him for some time and to become aware of the more subtle bond which exists between us. तो deliberately उनके मास्टर ने ऐसा किया कि नहीं, मैं थोड़ा इनको दूर भेजूं, इनको आदत पड़ जाए, नहीं तो उनको आदत पड़ जाएगी मेरे शरीर की, मैं ये चीजों को ना बंधन को तोड़ना चाहता हूँ. That's why he sent me to different teachers in different part of the Himalayas. I gave the doctor a long letter to show Dr. Chandradhar and Dr. Mitra of Kanpur, India. In the letter, I asked them to lead him to Jageshwar, where my master was camping next to the temple and teaching Professor Nixon, Krishna Prem, and Dr. Alexander Anandabiku. इनका हमने दोबारा पहले भी पढ़ा था, जो इनके अपने गुरु माँ के ये भगत रहे हैं ना, जिनके हमने दोनों का देखा था. इन्होंने जब वो कृष्ण जी का वो स्टैचू रखा था तो कैसे कृष्णा प्रेम जी ने देखा, उनके आंसू बह रहे थे, बिकॉज वो हिंट दे रहे थे उनके माँ कि नहीं ये थोड़ा स्लॉथरी में इंडल्ज हो रहे हैं, ही इज नॉट डूइंग हिज प्रैक्टिस, और जो भी समाधि प्रॉपर नहीं लगा रहे, मेडिटेशन उस तरह से नहीं कर रहे हैं. तो उन्होंने डॉक्टर को वो लेटर दे दी कि चलो आप डॉक्टर चंद्रधर, डॉक्टर मित्र जो कानपुर के, उनको दिखा देना.
और फिर आगे बोला कि चलो आगे जाके जगेश्वर में जाके इनके मास्टर वहां पर कैंपिंग कर रहे हैं और सिखा रहे हैं दोनों को, कृष्णा प्रेम और आनंद बीकू को। कहते with the help of the doctors of Kanpur, the German doctor met my master, stayed with him for 3 days and then returned to Germany. 3 दिन मिलने के बाद वो वापस आ गए. He then arranged for me to visit different institutes and universities through Europe. I met with a great many Western doctors and psychologists. After visiting several European countries and studying in my institutions and universities, I returned to India. Sometime later, this doctor again left for India, where he became sannyasi. He now devotes his time to meditation in a small thatched hut in the northeastern Himalayas. Some Westerns call him crazy because he prefers to live in isolation. I have met a few foreigners like him who have become swamis, and I found them to be more serious than many of the Indian swamis. Swami ji कहते कई बार ऐसा होता है ना, जो फॉरेनर्स लोग इधर आके स्वामी बनते हैं ना, दे आर मोर सीरियस, दे टेक दिस थिंग मोर अर्नेस्टली rather than the Indian swamis. Probably they take everything for granted. फिर कहते a prophetic vision is the rarest of all visions. It flashes from the source of intuition and is therefore beyond the concept of time, space, and causation. Such a vision sometimes is received by laymen accidentally, but those who do meditation and truly have attained the fourth state of mind receive such guiding visions consciously. This unalloyed vision always come true. कहते क्या होता है ना, जो आम इंसान है उसको तो चलो वैसे ही आ जाते हैं, पर ये जो अपने जो मेडिटेशन करते हैं, इनको तो जब भी ऐसे कोई विजन आते हैं वो आगे जाके सच ही होते हैं. और एक्सीडेंटली तो लेमैन से आम आदमी को आ जाते हैं, पर जो मेडिटेशन करते हैं ना और बिल्कुल डीप ट्रूली मेडिटेशन करते हैं, तो उनको जब ऐसे विजन्स आते हैं ना, ऐसे विजन्स उनको गाइड करने के लिए आते हैं और हमेशा आगे जाके उनका रास्ता बनाते हैं और सच हो जाते हैं. नेक्स्ट चैप्टर इज ट्रांसफॉर्मेशन इन द केव. कहते स्वामी जी कहते फॉर 11 months I lived in a small cave. मैं 11 महीने के लिए छोटे केव में रहा. For those 11 months, I never saw a single human being. 11 महीने तक मैं किसी भी इंसान से नहीं मिला. In our tradition, this is an essential practice. Usually, it is not practiced for less than 11 months. कहते हमारे ट्रेडिशन में होता है, ये प्रैक्टिस की जाती है, 11 महीने से कम नहीं की जाती, because it is believed that even the most inert aspirant will realize the highest truth through this practice during that period. क्योंकि कहते से माना जाता है ना, उस पीरियड के दौरान highest truth का आपको एहसास होता है. So the teacher says, no matter how able you are, I will assume you to be the most inert. You will have to complete 11 months in the solitude of the cave. You're not allowed to come out and take a bath, but you are taught a vigorous breathing practice which cleans your pores and which is actually better than bathing. तो उन्होंने जैसे भी इनको गाइड करते हैं ना मास्टर, वो कहते हैं इवन कि नहाने के लिए भी, जल स्नान करने के लिए भी तुम बाहर नहीं आओगे. और इस तरह से इनको बड़ी वो विगरस ब्रीदिंग प्रैक्टिस सिखाई जाती है, ऐसी क्रिया जिसमें उनके जो पोर्स होते हैं शरीर के, एकदम से उनको वो सफाई हो जाती है, साफ कर देते हैं. कहते ये तो नहाने से भी बेटर है जिस तरह से वो हेल्प करती है क्रिया. कहते you get a very limited amount of food once a day and some water, but that is quite sufficient to maintain life. तो ये जो 11 महीने का बता रहे हैं उसमें बहुत कम इनको खाना मिलता है और कहते बस बहुत ही कम ही पानी भी पीने को मिलता है और हमारे लिए उतना सफिशिएंट होता है कि हम सर्वाइव कर सके. कहते my food was mostly barley and mountain vegetables, some juices and glass of milk in the morning and one in the evening. In the limited space of the cave, which was 6 feet by 6 feet, I would do a few postures regularly and would sleep for 2 to 3 hours only. तो जो स्वामी जी को उन्होंने postures बताए थे वो करते थे. 6 by 6 feet की उनकी केव थी, पर कहते मैं 2 से 3 घंटे ही सोता था. The rest of the time I remembered my Guru mantra and meditated or gazed. 3 times a day I did pranayam vigorously but very cautiously. तो स्वामी जी अपना पूरा रूटीन बता रहे हैं कि मैं गुरु मंत्र भी याद करता था, मेडिटेट करता था, या मैं गेज भी करता था और 3 बारी एक दिन में जो प्राणायाम क्रिया जो बहुत विगरसली होती है वो करता था, पर बहुत बहुत ध्यान से करता था. कहते the entrance of the cave is closed, but there is an outlet for the waste to wash away and tiny needlepoint hole in the ceiling of the cave where a single shaft of light can enter. कहते जो बाहर का दरवाजा था ना केव का, वो तो बंद होता था, पर एक आउटलेट होता था where you can just kind of answer the call of nature or empty your bladder. और कहते वो
एक इतना सा जैसे सुई के बराबर इतना सा छेद होता था ना, छिद्र होता था, ताकि वो ना थोड़ी सी लाइट एंटर कर सके। कहते दिस टाइनी होल इज टू एड इन कंसंट्रेटिंग इन माइंड ऑन अ सिंगल पॉइंट। जो ये टाइनी होल था ना, उससे हमें मदद मिलती थी कि हम कंसंट्रेशन से अपना कर सकें। कहते दिस हैपेंस स्पॉन्टेनियसली इवन इफ यू डोंट वांट इट to happen. You don't have to make any effort to concentrate in that situation because there is only one ray of light and nothing else. कहते चाहे तो आप इसको कंसंट्रेशन से करो, या आपको मतलब एफर्ट करना ही नहीं पड़ता था कंसंट्रेशन। सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, या ओके। कहते हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है इसके कंसंट्रेशन के लिए, क्योंकि आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, चारा ही नहीं है, एक ही तो रे ऑफ लाइट आ सकती है उस छिद्र से। In such isolation, what will you do the whole day if you don't learn meditation? You have no choice. एक तो आप बिल्कुल अकेले हैं, ऊपर से उतनी सी लाइट आ रही है जो नीडल में जितना वो होता है। कहते तो फिर और क्या है? What would you do? You would just meditate. If you don't do meditation, you quickly become imbalanced. You have no choice. The sages systematically teach you the method of going deep into meditation. They say this is the first step, the next the third, and so on. They will describe certain symptoms that arise out of meditation. When a particular symptom appears, then you know you're going to the next step. तो जो भी उनको सिम्टम्स बताए जाते हैं, कहते हैं जब हमारे साथ ये होता है तो हमें पता है हमारे नेक्स्ट स्टेप की बारी आ गई है. In this way you attain the highest degree of concentration. They keep a strict watch on you so that you remain undisturbed and do not go through suffering of any sort. तो कहते हैं वो हमारे ऊपर नजर भी रखते हैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट. Dwelling in the cave for the first 2 months was very difficult for me, but later I started enjoying it immensely. The science of Raja Yoga teaches samyama, inner transformation through concentration, meditation, and samadhi. During this training, I discovered that without living in silence for a considerable time, maintaining a deeper state of meditation is not possible. फिर स्वामी जी कहते after 11 months I came out of the cave. 11 महीने बिल्कुल अकेले और ऐसे छोटी सी केव के बाद स्वामी जी finally comes out. कहते it was 5 o'clock in the morning on July 27th. I was asked not to stay outside in the sun for the first week, क्योंकि बिल्कुल अंधेरे में होते हैं ना, थोड़ी सी लाइट होती है कि भी आपको पहले हफ्ते तो इतना एकदम से डायरेक्ट सन में नहीं जाना. I had difficulty in adjusting to the external world. Everything looked different, as though I had come to a strange new world. The first time I went to the city, it took me 40 minutes to cross a street corner because I was not accustomed to so much external activity. तो स्वामी जी के वो स्वामी जी अपना बता रहे हैं 11 महीने के बाद कहते एक अगर मुझे दूसरी तरफ भी स्ट्रीट के कॉर्नर में जाना होता था ना, 40 मिनट लगते थे क्रॉस करने में, बिकॉज his body was not accustomed to that chaotic and external activity. But gradually I became able to deal with the world. Coming back to the external world, I realized that the world is a theater where I could test my inner strength, speed, emotion, thoughts, and behavior. After the completion of this training, I was prepared to come to the West. I did not want to leave my master, but he insisted. He said, you have a mission to complete and a message to deliver. कि तुम्हारा तो मिशन है, तुम्हें mankind को क्या मैसेज देना है, क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं. My master then instructed me to go to Japan. He told me that I would meet someone in Japan who would help me to come to the United States. फिर स्वामी जी कहते I left for Tokyo from Calcutta by plane with only $8 in my pocket. When we stopped in Hong Kong, I ordered tea in the airport restaurant and was surprised to be presented with a bill of $4. So स्वामी जी कहते मेरे पास $8 ही तो थे और मेरा बिल आया $4 का. I left another $1 as a tip, so I arrived in Tokyo with only $3 and an apple, which I had saved from the meal aboard the airplane. A man came up to me and asked where I had come from and where I would be staying in Japan. I told him I have a friend and I will stay with him. He asked me, who's your friend? I don't know how to answer him since I didn't know anyone in Japan. तो स्वामी जी ने तो ऐसे बोल दिया, कहते मैं क्या बोलूं, मैं तो किसी को जानता ही नहीं था जापान में, since I didn't know anyone in Japan. So I said, you are that friend. I stayed with him and he introduced me to Yoka-san, the spiritual head of Mahikari. He has a following of 700,000 Yogadasan and had many visions of a sage of the Himalayas. जिनकी बात कर रहे हैं वो भी पहुंचे हुए थे. कहते उनकी ऐसी फॉलोइंग थी और उनको भी विजन्स आते थे हिमालयन सेंट्स के. When I was introduced to him, he hugged me with reverence and said, I've been waiting for you.
I hope you will give me the secret teachings of the Himalayan masters. So Swami Ji ke liye, like everything was on the platter, you know, how he came and he became his friend and he said, okay, you know, I've been really, really waiting for you. The Swami Ji kehte, I lived with him for 6 months and had occasion to address and teach various spiritual groups in Tokyo, Osaka, and other cities. After I'd imparted the message of my master to Yoka-dasan, he bought me a ticket and I continued on my journey to the United States. Before I had left India, my master had told me that in the United States, I would meet my students and associates. He described many details to me, which have since come true. I still have to complete my task. This sometimes makes me pensive, but I know that when the Lord gives me the opportunity, I will fulfill the purpose of my life. Swami Ji कहते कई बारी चीजें तो ऐसी हो जाती हैं which makes me pensive, which makes me thoughtful, but मुझे पता है, मुझे ईश्वर ने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि मुझे जो भी मेरा पर्पस है जिंदगी का, मुझे उसको संपूर्ण करना है. My purpose is to create a bridge between the east and west. तो स्वामी जी ने एक ब्रिज बनाया है ना, ईस्ट और वेस्ट का. so that क्या क्या करके स्वामी जी, by establishing a center of learning from where I can faithfully deliver the messages of the sages. एक ऐसा सेंटर बना के, ताकि जो भी मैंने सीखा है ईस्ट और वेस्ट को जोड़ के, यू नो, एक ब्रिज बना के, तो मैं ताकि फेथफुली, यू नो, मैं वो डिलीवर कर सकूं जो भी उन्होंने सीखा, जो भी मैसेजेस हैं सेजेस के. जिस तरह से परमहंस योगानंद जी भी अमेरिका गए थे, अपने उनके मास्टर ने भी तो यही कहा था ना कि तुम्हारा मिशन है वेस्ट को जाके ये सारे मैसेजेस देने हैं और जागृति करनी है. और इस तरह से स्वामी जी के मास्टर भी चाहते थे वो भी ऐसे करें. Now the next chapter is ways of east and west. When I left the Himalayas to visit Japan and the United States, my master gave me a few instructions. I asked him, what shall I teach to the students who wish to learn from me? Shall I convert them and teach the religions of India? Shall I ask them to follow the Indian culture? He said, you foolish boy. तो इन्होंने जब हिमालय छोड़ के जापान और यूनाइटेड स्टेट्स गए थे ना, तो मास्टर ने उनको फिर इंस्ट्रक्शंस दी थी कि तो मैंने उनको बोला कि मैं क्या करूं, क्या इनको सिखाऊं, मैं क्या, मैं इनको कन्वर्ट कर दूं, कि मैं उनको इंडिया के रिलीजन्स के बारे में बताऊं, उनके धर्म के बारे में बताऊं, या क्या बोलूं, इंडियन कल्चर को फॉलो करो. तो उसके मास्टर जी बोलते हैं, oh you foolish boy. I said, then tell me, what shall I teach them? The culture in the West is entirely different from ours. Our culture does not allow one to get married to anyone without the consent of other family members, while the culture in the West believes in a free social life. ये तो देखो जो हमारे भारत देश की सभ्यता है, हमें इतनी इजाजत नहीं, हम किसी को भी शादी ऐसे कर ले जब तक family members की हाँ ना हो. कहते हैं यहाँ पर, you know, foreign culture is quite different. They have the free will and, you know, they have entire freedom. Or a Christian can get married to anyone, and the Jewish people do likewise. Of course, their ways of worshiping God are set in a fixed particular style, while we worship the way we like and choose the path of enlightenment we want. So I mean, together we are free thinkers, but we are in the bondage of social laws, and they are in the bondage of certain fixed ideas in the way of thinking and worshiping. तो ये स्वामी जी बता रहे हैं ना कि किस तरह से you know, हमारा धर्म के हम लोग कैसे करते हैं और वो लोग कैसे करते हैं, कि उनके कई तरीके तो उनके, you know, they have fixed ideas. I asked, these two diverse ways of life seem to be quite apart. How can I deliver your message to the West? क्योंकि बिल्कुल ही रास्ते अलग हैं, बताइए मैं आपका मैसेज कैसे करूं वेस्ट में. He said, though these cultures live in the same world with the same purpose of life, they are each extreme. उनके मास्टर कहते हैं दोनों ही extremist हैं, उनके दोनों के ही तरीके extreme हैं. Both East and West are still doing experiments on the right ways of living. The message of the Himalayan masters is timeless and has nothing to do with the primitive concepts of East or West. Extremes will not help humanity to attain the higher step of civilization for which we all are striving. Inner strength, cheerfulness, and selfless service are the basic principles of life. तो बिल्कुल ठीक कहा उनके मास्टर ने. कहते ये जो हिमालयन मास्टर्स की जो सीख है ना, वो तो टाइमलेस है, तुम इस तरह के उसको डिवाइड नहीं कर सकते हो. और वो कहते हैं जो रियल ह्यूमन बीइंग क्या होता है, यू नो,
पहले तो ये जान लेते हैं, हाँ कहते हैं इनर स्ट्रेंथ, चीयरफुलनेस, सेल्फलेस सर्विस ही तो प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है. इट इज इमटेरियल. ये कोई इससे कोई मतलब नहीं बनता कि तुम इसको डिवाइड करो कि या कोई ईस्ट में ऐसे होता है, वेस्ट में ऐसे होता है. कहते हैं इट्स पहले तो इंसान बनना जरूरी है ना. A human being should be a human being first. कहते हैं it is immaterial whether one lives in the east or west. A human being should be a human being first. A real human being is a member of the cosmos. Geographical boundaries have no powers to divide humanity. क्योंकि मास्टर ने बहुत अच्छा जवाब दिया है. कहते हैं it's immaterial. What are you talking? East और west में ये होता है, आप ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं. और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज क्या है? क्या इसमें कोई ताकत थोड़ी है कि यू कैन डिवाइड ह्यूमैनिटी? कहते टू गेट फ्रीडम ऑफ ऑल फियर्स इज द फर्स्ट मैसेज ऑफ द हिमालयन सेजेस. ये हमने बार बार वो हमें पढ़ा रहे हैं कि डर को खत्म करना चाहिए अपने. कहते द सेकंड मैसेज इज टू बी अवेयर ऑफ द रियलिटी विद इन. जो हमारी रियलिटी क्या है अंदर, हम आत्मा है और हमारे अंदर वो प्रभु का वास है. That's a supreme consciousness. The second message is to be aware of the real reality within. Be spontaneous and let yourself become the instrument to teach pure spirituality without any religion and culture. अपने आप को उसमें अवेयर करना कि प्योर स्पिरिचुअलिटी क्या है. इसमें कोई धर्म और कोई कल्चर की कोई बात ही नहीं है. कि all the spiritual practices should be verified scientifically. If science has the capacity to do so, let Providence guide you. With reverence, I made a bow and started for my journey. I came to the city of Kanpur, where I stayed for a few months with our disciple, Dr. Sunanda Bai, who bought my air ticket to Japan. Uske baad hai next chapter, that is our tradition. That's the last chapter of this book, our tradition. Swamiji kehte hain, Shankaracharya established an ascetic order 1,200 years ago. Though renunciates had already lived in an unbroken lineage from the Vedic period, he organized his orders through 5 main centers of the north, east, south, west, and center of India. The entire ascetic order of India traces its tradition from one of these centers. Our tradition is Bharati. Bha means knowledge, Rati means lover, Bharati means he who is the lover of knowledge. From this comes the word Bharata, the land of spiritual knowledge, one of the Sanskrit names used for India. There is one thing unique to our tradition. It links itself to an unbroken lineage of sages, even beyond Shankara. Our Himalayan tradition, though a tradition of Shankara, is purely ascetic and is practiced in the Himalayan caves rather than being related with institutions established in the plains of India. In our tradition, learning of the Upanishads is very important, along with the special advanced spiritual practices taught by the sages. The Mandukya Upanishad is accepted as one of the authoritative scriptures. The knowledge of Sri Vidya is imparted stage by stage, and the advanced students is taught Prayoga Shastra, which explains the practicality and application of the discipline one has to follow for this knowledge. We believe in both the mother and the father principles of the universe. That which is called Maya or illusion in our worship becomes the mother and does not remain as a stumbling block or obstacle on the path of spiritual enlightenment. All of our worship is internal and we do not perform any rituals. There are 3 stages of initiation given according to our tradition. First, mantra, then breath awareness and meditation. Second, inner worship of Shri Vidya and Bindu Bhedana, piercing the pearl of wisdom. Third, Shaktipat, and leading the force of Kundalini to the 1,000 parallel lotus called the Sahasra Chakra. At this stage, we do not associate ourselves with any particular religion, caste, sex, or color. Such yogis are called masters and are allowed to impart the traditional knowledge. We strictly follow the discipline of the sages. तो ये स्वामी रामा जी सारा बता रहे हैं किस तरह से होता है. कहते it's not possible for me to discuss in detail the secret teachings of Prayoga Shastra, for it is said, na datavyam, na datavyam, na datavyam, don't impart unless someone is fully prepared and committed and has practiced self-control to high degree. These attainments can be verified through the experiences of the sages of the past. In our path, Gurudeva is not a god, but a bright being
who has faithfully and sincerely attained a state of enlightenment. We believe in the grace of the Guru as the highest mean for enlightenment, but never as the end. The purpose of the Guru is to selflessly help the disciples on the way of perfection. Yet our tradition has the following orientation. One absolute without a second is our philosophy. Serving humanity through selflessness is an expression of love, which one should follow through mind, action, and speech. Third, the yoga system of Patanjali is a preliminary step accepted by us for the higher practices in our tradition. But philosophically, we follow the Advaita system of one absolute without a second. Okay, the meditation is systematized by stilling the body, having serene breath and controlling the mind, breath awareness, control of the autonomic nervous system, and learning to discipline primitive urges are practiced. Number 5, we teach the middle path to students in general, and those who are prepared for higher steps of learning have the opportunity to learn the advanced practices. This helps people in general in their daily lives to live in the world and yet remain above. Our method for the convenience of Western students is called superconscious meditation. I'm only a messenger delivering the wisdom of the Himalayan sages of this tradition, and whatever spontaneously comes from the center of intuition that I teach. I never prepare my lectures or speeches, for I was told by my master not to do so. जैसे स्वामी जी ने तो हिमालय ने अपना इंस्टीट्यूट भी बनाया हुआ है ना, तो उसी के बारे में स्वामी जी बताएं किस तरह से अपना कर रहे हैं. तो we do not believe in conversion, changing culture, habits, or introducing any god in particular. We respect all religions equally, nothing all and excluding none. Neither do we oppose any temple, mosque, and church, nor do we believe in building homes for God while ignoring human beings. Our firm belief is that every human being is a living institution or a temple. Number 7, our members are all over the world, and for the sake of communication, we also believe in education. Our graduate program imparts the knowledge given by the sages, thereby fulfilling the inner need of intellectuals. So number 8, Swami Ji कहते हैं, we practice vegetarianism. We teach a nutritional diet that is healthy and good for longevity, but at the same time, we are not rigid and do not force students to become vegetarians. Number 9, Swami Ji कहते हैं, we respect the institution of the family and stress the education of children by introducing a self-training program and not by forcing a belief, ways, and way of life on them. Number 10, our trained teachers systematically impart all aspects of yoga relating to body, breath, mind, and individual soul. Awareness within and without is the key, and the methods of expansion are carefully introduced to the students. Number 11, to serve humanity, we believe in examining, verifying, and coming to certain conclusions regarding the yoga practices, including relaxation and meditation. Number 12, our experiments are documented and published for the benefit of humanity. Number 13, we believe in universal brotherhood, loving all and excluding none. Number 14, we strictly abstain from politics and from opposing any religion. Number 15, of great importance is the practice of non-violence with mind, action, and speech. फिर आगे स्वामी जी कहते हैं, the knowledge that is imparted by the sages and masters of the Himalayas guides the aspirant like a light in the darkness. The purpose of the message is to awaken the divine flame that resides in the reservoir of every human being. This flame, when perfectly kindled by spiritual discipline, mounts higher and higher into vast light of truth. It rises through the vital of nervous mind, passes through our mental sky, and finally enters at the paradise of life, its own supreme home in the eternal truth. Then the illumined practitioner sits calm in his celestial sessions with the highest of powers and drinks the wine of infinite beatitude. This child of immortality is a child of universal parents, protected by the Mother Divine. The rapturous child of bliss remains divine, will intoxicated in delight. He becomes a sage, a sleepless envoy, an ever wakeful guide for those who tread the path. Such a leader on the path marches in the front of the human people to comfort, help, and enlighten them. Om Shanti, Shanti, Shanti. सो संगत जी, गुरु जी की कृपा से ये किताब संपूर्ण हुई है, और अगर गुरु जी चाहेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे, tomorrow will be the last session. जो भी इसमें
इम्पोर्टेंट चीजें इम्बाइब करने की है, विल जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन दैट, क्योंकि संपूर्ण तो हो गई है। दिस बुक इट कंप्राइजेस 450 चैप्टर 450 पेजेस। तो उनमें से जो 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 चीजें हाईलाइट करने वाली हैं, सो दैट वुड बी द लास्ट सेशन विद गुरुजी's ग्रेस। ऐसा लगा कि गुरुजी ने जैसे बोला कि जेडी मोटी मोटी चीजें है ही है ना, बस उन्होंने उसे ग्रहण करना हैगा है। But that has been a beautiful journey कि एटलीस्ट हमें गुरुजी ने इस लायक समझा कि हम एक स्पिरिचुअल प्लेन के बारे में भी जान सके, उसके अलावा हिमालयन सेजेस के बारे में भी। और क्या हमने जाना कि इंसान के लिए एक नियामत है ये ह्यूमन बॉडी, और उसमें इतनी 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 शक्ति दी है ईश्वर ने, इतनी पोटेंशियल दी है कि वो कुछ भी किया जा सकता है। उस शरीर से कितनी बॉडीज आप बना सकते हो, कहीं बैठे आप किसी की हेल्प कर सकते हो, माइंड इन्फ्लुएंस कर सकते हो। जैसे पर काया प्रवेश के बारे में पढ़ा, ये हिमालयन सेजेस कर सकते हैं, इनका मकसद दूसरा होता है। और जो ट्रू सेंट्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी हाइड करके अपने उसमें करते हैं। और हमने इसमें ये भी जाना ना, कई ऐसे भी सेंट थे, उनका मोटिव था रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना। तो रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उन्होंने उस तरह से तपस्या की है तो रब कहता फिर ठीक है, फिर ले लो रिद्धि सिद्धियां। तो कई लोग तो अपने पैसे के लिए रिद्धि सिद्धियां लेते हैं, फेम के लिए लेते हैं। पर जो ट्रू हिमालयन सेजेस हैं उनके पास, डिस्पाइट ऑफ हैविंग so many powers, they don't like to exhibit it unnecessarily until it's really required for somebody's help. So that's जैसे बंगाली बाबा जी हमने देखे हैं, स्वामी रामा जी के जो मास्टर रहे हैं, वो तो मतलब बहुत 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 ही पहुंचे हुए। और जब भी किसी भगत की पुकार हुई, चाहे किसी को नदी में कोई डूब रहा हो, उधर से बचाना हो, या किसी भी तरह से, जैसे उस लड़की को जिसको डर था कि कोई रेप ना कर जाए, वो घोड़े पे आके उसको ले गए। मुझे लग रहा है कि अगर मैं मतलब जितना कि मुझे याद है अब, और ऐसी ऐसी चीजें सिखाई हैं कि हिमालयन सेजेस के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और स्वामी रामा जी, अभी मुझे संगत जी वो नाम नहीं याद आ रहा, मैंने सोचा था इस किताब में है, बट दैट वाज समथिंग एल्स, सम अदर बुक, जिसमें एक शब्द आया था चेलो। तो वो अपने किसी को बोलते हैं चेलो, गुरुजी हमेशा कहते थे चेलो, मतलब चलो को बड़े प्यार से कहते चेलो हुन। तो जब मैं वो शब्द पे आई तो मैं रुक गई। तो वो किताब ऐसी थी जिसमें जैसे ये तो इनकी जर्नी है ना स्वामी रामा जी की, फ्रॉम जैसे भी है डॉलसन पीरियड एंड हिज यूथ, एंड हाउ how he was so inquisitive, and we have seen all things about him. We have learned everything about him, his stubbornness, and the way he was so inquisitive. He would answer, he wanted answer of everything. And then we learned that initially he used to get enamored also by money, and things like that. Little very very little, I would say, materialistic approach. पर इन चीजों को स्वामी जी ने सबको मतलब अपनी जर्नी का एक पूरा करके ट्रांसपेरेंट होके सारा कुछ, दिस बुक इज ऑल अबाउट ट्रांसपेरेंसी। स्वामी जी ने कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी कि यस किस किस तरह से उनके विचार भी आए, कैसे कैसे, पर वो प्रोग्रेस करते रहे। ही नेवर गेव अप। तो जब एक शब्द एक आया भी, जब उनके स्वामी जी ने कहा बंगाली बाबा जी ने कि नहीं तुम ये ले जो हीरे जवाहरात ले लो, या तुम गवर्नमेंट ऑफिशियल बन जाओ, पर नहीं, स्वामी जी की जो अर्ज थी कि नहीं मुझे सब कुछ जानना है। और स्वामी जी प्रैक्टिकलिटी भी देखते थे हर चीज की, साइंटिफिक अप्रोच से भी देखते कि ये कैसे पॉसिबल है। तो जो मैंने वो किताब पढ़ी जो नेक्स्ट एक है, बट आई डोंट नो, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, बट इट्स ऑल अबाउट स्वामी रामा जी। लाइक in that book he's a perfect master now he can do anything. मुझे याद है उसमें एक इंसिडेंट ऐसे था, एक औरत की कोई अंगूठी खो जाती है, तो स्वामी जी कहते थे मुझे तेरी अंगूठी ढूंढने के लिए इतना छोटा बनना पड़ा और वहां जाके ढूंढनी पड़ी। और एक भी किसी किताब में पढ़ा, एक भगत ऐसे थे, जब उनके कोई क्वेश्चन ऐसा आया एंड ही थॉट दैट ही इज गोना फ्लंक, तो जैसे वो मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं तो स्वामी जी डॉट बन के उधर उधर ही उसका ठीक करवाते रहे। तो मतलब क्योंकि ये सारा है कि उनकी जर्नी के बाद वो आप कैसे बन गए। नहीं तो गुरुजी कहते भगती करनी कोई सौखी हैगी, पत्ते भी खादे। और मतलब गुरुजी का तो खैर वो तो शुरू से ही अवतार रहे हैं ना। पर ये हिमालयन सेजेस जो जिनका अंदर से एक पुकार होती है कि नहीं वी वांट एनलाइटनमेंट,
फिर वो अपना दूसरा रास्ता अपनाते हैं, हिमालयस पे जाके रहते हैं। और हिमालयस आर सो डिवाइन, जो पहले चैप्टर्स हैं शुरू के, उसमें स्वामी रामा जी ने हिमालयस की ब्यूटी के बारे में ही बताया है कि वहाँ के लोग कैसे होते हैं, और वहां पर ऐसे कुछ भी मतलब दे आर वेरी सिंपल पीपल, और किस तरह की हर्ब्स होती हैं। तो जो कल वाला होगा उसमें तो सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको ग्रहण करेंगे, और दैट वुड बी द लास्ट सेशन ऑफ दिस डिवाइन बुक। अब मैं चाहती हूँ कि जो हमने अभी इतने इतने सेजेस का जो जो मुझे याद है, उनको हम नमन जरूर करें, क्योंकि वो हमसे तो सब हम ऑर्डिनरी इंसान से ये तो बहुत ऊपर है। सबसे पहले स्वामी रामा जी के मास्टर्स, सबसे पहले स्वामी रामा जी के मास्टर बंगाली बाबा जी को, उनके बारे में हमने जाना, उनको नमन करते हुए फिर तत्व वाले बाबा जी को, उनको भी हम सबको नमन करते हैं। स्वामी रामा जी के मास्टर बंगाली बाबा जी, तत्व वाले बाबा जी, फिर फायर थ्रोअर स्वामी जी, जो अपने मुख से आग निकालते थे वो, फिर हमने बहुत बहुत प्यारे नीम करोली बाबा जी जो हनुमान जी के अवतार रहे हैं, उनके बारे में। फिर माता जी जो शाम के थे, जो कामाख्या टेम्पल में रहते थे और वो कभी भी सोते नहीं थे, शी यूज्ड टू एंजॉय स्लीपलेस स्लीप, उनके बारे में जाना। देवराहा बाबा जी जिनको एजलेस बाबा कहा जाता है, प्रभात स्वामी जी के बारे में। फिर ऐसे एक स्वामी जी के बारे में जिन्होंने स्वामी रामा जी को जो स्वामी रामा जी थॉट दैट ही इज एट माय बैक एंड कॉल, पर जब उनकी बस हो गई तो उन्होंने बोला ओके यू कीप ऑन ब्रशिंग, तो वो स्वामी जी वो करते रहे करते रहे करते रहे, बिकॉज ही वांटेड टू ब्रेक द स्वोलन ईगो ऑफ स्वामी जी। फिर हमने विष्णु महाराज जी के बारे में जाना। फिर स्वामी जी के बारे में जाना जो अजगर वृत्ति में रहते थे, पाइथन जिनकी टेंडेंसी होती थी, और एक ही जगह में वो हिले नहीं 3 महीने के लिए, और जिन्होंने स्वामी जी को किक भी मारी थी टू टेस्ट हिज कंट्रोल ऑफ एंगर। और फिर ऐसे स्वामी जी जिन्होंने एंट को लेके ना, कीड़े के जो 3 हिस्से करके उसको जोड़ दिया, वो भी स्वामी जी को दिखाने के लिए कि देखो जैसे तुम समझते हो कि तुम ही हो, कि ये भी चीजें होती हैं लाइफ के बारे में, कि मैं जोड़ भी सकता हूँ। फिर हमने गुदारी बाबा जी के बारे में जाना, जिनका बहुत भारी खंबल होता था, and he constantly traveled in the region of Himalayas where जहां पर वैली ऑफ फ्लावर्स थी। फिर हमने अपने हरिओम के बारे में जाना, जो कहते थे ना, क्यों खोलूं आंखें जब आई एम ऑलरेडी विद दैट वन हु इज द फाउंटेन ऑफ ब्यूटी, तो मुझे क्या जरूरत है मैं अपनी आंखें खोलूं। फिर हमने वो डांसिंग वुमेन के बारे में जाना जिनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई थी, एंड देन आफ्टर दैट शी वुड कंटिन्यूअसली चैंट रामा रामा, और उन्होंने अपने शरीर छोड़ने से पहले भी कहा कि मेरा शरीर नदी में डाल दिया जाए ताकि मछलियां खा सकें। फिर हमने नाग बाबा जी के बारे में जाना, who also transformed himself, कहा उनके जब पिताजी का मर्डर हो गया था, उन्होंने भी 5 लोगों का मर्डर किया, पर वो इंटेंशनली नहीं किया था ना, इट वाज आउट ऑफ रिवेंज, पर फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया, बिल्कुल उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। फिर हमने कंकरिया बाबा जी के बारे में भी जाना, जो जाते थे लोगों को कहते थे एक एक कंकर लेके आओ, ताकि ना मतलब वो इतना नहीं चाहते थे कि उनकी भक्ति में डिस्टर्बेंस हो, वो कंकर करते करते इतना पाइल होके वो फिर ऊपर बैठ के थोड़ा सा डिस्टेंस उनको मिला लोगों से। फिर हमने फिर हमने उन स्वामी जी के बारे में भी जाना जिनके मास्टर ने कहा था ना कि तुम यू गॉट टू अवॉइड 3 थिंग्स, गोल्ड, वुमेन एंड फेम। पर चलो इन चीजों के बावजूद भी वो बाद में उन्होंने अपना रास्ता बदला, चेंज हो गए, बिकॉज उनको लगा कि नहीं मैं तो फिर इन्हीं चीजों में धंसता जा रहा हूँ। फिर हमने उसे यंग मैन के बारे में भी जाना जो who got really enamored by seeing Swamiji's watch, but his life got completely changed after that. फिर हमने 2 naked renunciates के बारे में जाना जो बड़े egoistic थे, they used to fight, फिर उन स्वामी जी के बारे में भी जाना जिन्होंने कहा टुडे माय पेरेंट्स हैव डाइड, दैट अटैचमेंट वाज माय मदर एंड एंगर वाज माय फादर। फिर हमने आनंदमयी माँ जी के बारे में जाना और ओल्ड वुमेन सेज के बारे में भी जाना जो स्मॉल दरगाह में रहते थे, जो हमेशा से स्मॉल दरगाह में रहते थे कि अपने बिलवड की याद में रहते थे। उड़िया बाबा जी के बारे में जाना, महात्मा गांधी जी के बारे में जाना, देन अघोरी बाबा जी के बारे में, देन पंजाबी महाराज, और शिमला स्वामी जी थे एक, महर्षि रमन जी के बारे में, श्री औरबिंदो के बारे में जाना हमने, ब्रह्मानंद सरस्वती के बारे में जाना। इस तरह से हमने फिर तांत्रिक टीचर जो मालाबार हिल्स में रहते थे, मिस्टिक फिलोसफर डॉक्टर रेनादे के बारे में, देन क्रिश्चियन सेज जिनको साधु सुंदर जी कहते थे, जेजुइट साधु,
देन बाल भगवान के बारे में जाना, जो यंग से थे। देन घरवाली साधु जी के बारे में, और एक सेज थे ना जो बाय रिवर रहते थे, एंड यूज्ड टू गेट अप एंड सेड दैट आई बिलोंग टू गॉड एंड नो वन एल्स। तो सिद्धा बाबा जी के बारे में जाना हमने, कृष्णाश्रम के बारे में, स्थैरिक स्वामी, चक्रवर्ती और गोपीनाथ जी के बारे में, जिनको मदद करने के लिए एक सेज ने, वन ऑफ द सेजेस took his form। तो ऐसे 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 हमने इन स्वामी जी के बारे में जाना है। ओल्ड वुमेन के बारे में भी जाना जिसने हर्ब्स के साथ ट्रीट किया। देन पर्वतिकार महाराज के बारे में, पहलारी बाबा जी, सोमबरी बाबा जी, सिद्धा जी जिनको दुर्वासा भी कहते थे, क्योंकि वो जब कोई आते थे पास में थोड़े से अपशब्द बोल देते थे ताकि कि मेरी विघ्न ना डालो मेरी भक्ति में। देन यशोदा माँ के बारे में, और इस तरह से ग्रैंड मास्टर, देन हरियाकन बाबा जी, विनय महाराज जी, इस तरह से इन सबको नमन। स्वामी जी ने इन सब के बारे में हमें पढ़ने का मौका दिए। और फिर इस तरह से जो कल सिर्फ हमने उन चीजों के बारे में रिफ्लेक्ट करना है, बिकॉज इट्स बीन लाइक 450 पेजेस, एंड आई थिंक सिर्फ पढ़ने का मतलब यही नहीं कि सिर्फ पढ़ना, उसके बाद हमें जो ऊपर से जिस तरह से गुरुजी गाइड करेंगे कि क्या क्या चीजें उठाने वाली है, डेफिनेटली वी गोना रीड दैट टुमारो इज गोना बी द लास्ट सेशन ऑफ दिस ब्यूटीफुल बुक। और थैंक यू स्वामी रामा जी, थैंक यू गुरु जी, अबव ऑल लाइक गुरु जी इज द डूअर ऑफ एवरीथिंग। गुरु जी ने हमें एक चांस दिया कि हम इन हिमालयन मास्टर्स के बारे में जानें। और स्वामी रामा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर ब्यूटीफुल जर्नी, क्योंकि जो मैंने वो किताब पढ़ी वो तो उसमें तो कंप्लीट वो बन चुके हैं मास्टर, एंड हाउ इज हेल्पिंग अदर्स, एंड किस तरह से उनकी फॉलोइंग है और किस तरह से उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट भी अपना बनाया। So thank you, Sangatji, for being with me in this beautiful journey, and we all have been really together, under one roof and reading this beautiful book. Thank you, Ekta ji, Shilpi. So tomorrow will be the last session with Guruji's grace. We're just gonna reflect what we have read. That's it, so that those things linger on, and we imbibe them and we engrave them in our heart. Thank you, Sangatji. Thank you. Jai Guruji, Shukrana Guruji, thank you Guruji, thank you Aunty ji, and thank you Sangat ji for joining me today.